Good morning, dear students. Today, the topics that we'll study are loan activities of banks. I have written it here three times because our three slides are based on that topic only loan activities of banks, and we'll learn the meaning of term credit. So, let us start. Loan activities of bank. Do you know the bank does various kind of activities, and the foremost two main activities, or you can say the primary function of bank or the primary activities of the bank are accepting the deposits and granting the loans. Means deposit लेना और लोन देना, और इसी के बीच में बैंक अपना प्रॉफिट अर्न करता है. ये मेन यू कैन से बिजनेस होता है बैंक का, और बाकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सेकेंडरी होती हैं. मेन प्राइमरी फंक्शंस यही होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग द लोन. और जब बैंक डिपॉजिट लेता है और लोन देता है, उसके बीच में बैंक पूरा का पूरा अमाउंट लोन में नहीं देता, ना ही पूरा का पूरा अमाउंट बैंक अपने पास रखता है. वो कुछ अमाउंट लोन में देता है, कुछ अमाउंट वो अपने पास एज अ रिजर्व्स में रखता है, यानी कि खुद संभाल के रखता है. सो वील सी. First, bank holds about 15% of their deposits as cash. So it is not necessary that bank will hold only 15%. It may be 10%, it may be 20%. It depends upon the terms and conditions issued by the RBI in our country particular. So RBI issues और RBI एक टर्म देता है बैंक को जिसे हम LRRV कहते हैं. ये हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, पर आपको मालूम होना चाहिए. LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, यानी कि बैंक को कुछ अमाउंट अपने पास रिजर्व में रखना ही होगा. तो दो तरीके के LRR बैंक मेंटेन करवाता है. Two kinds of LRR bank, our central bank, that is RBI, suggests banks to maintain. First is CRR and another one is SLR, cash reserve ratio, and statutory liquidity ratio. और ये दोनों तरीके के ही एक रेशियोज होते हैं, यानी कि टोटल डिपॉजिट जितने बैंक के पास है उसमें से कुछ कुछ अमाउंट इन रिजर्व्स में रखना है और बाकी वो चला सकता है. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डीप बिकॉज दे आर द हायर concepts. Just you should understand that bank keeps a very little amount with themselves as a you can say reserve, and the maximum amount is granted as loans to other people, and that is the main function of bank. That is why banks are also known as financial intermediaries. That means they intermediate between, or they mediate between those who have surplus money and those who have you can say deficient money, or they don't have they require money, you can say. So here bank holds nearly 15% of their deposit as cash. Now why banks hold deposit as cash? Why not bank can give entire amount to other persons as loan? Yes, think. बैंक ऐसा क्यों नहीं करता कि बैंक सिर्फ कुछ ही जो अमाउंट अपने पास रखता है वो रख रहा है और वो भी लोन में दे दे. बैंक क्या जरूरत है थोड़ा सा भी अपने पास रखने की? जितना आ रहा है उतना का उतना वो लोन में दे दे और प्रॉफिट अर्न करे, इंटरेस्ट अर्न करे. बैंक जनरली यही कहता है. बैंक जनरली डज दिस ओनली, दैट दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एट द लोअर इंटरेस्ट रेट एंड दे ग्रांट लोन्स एट द हायर इंटरेस्ट रेट, एंड इन बिटवीन द डिफरेंस इन इंटरेस्ट ऑफ लैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द बैंक. तो बैंक का जो प्रॉफिट है वो तो और ज्यादा हो जाएगा जब बैंक पूरा ही डिपॉजिट लोन के रूप में दे देगा. तो वो क्यों रिजर्व्स रखता है? थिंक अबाउट इट. Yes, it is a reason, because if someone will go to the bank that yes, give my money back, then what will bank give if they are giving entire money as a loan? Now here one more question comes. Then what will happen when everyone or every depositor of bank goes to the bank and says give my money back? So in an economy, in a very big economy, it does not happen. It is in the flow only. Even you can say at a particular point of time, all depositors will never come to the bank for asking their money back. And also there is always an inflow of new deposits, means new bank accounts are also are opened in the bank in a regular interval time. So that is why bank keep a little amount as a reserve and the rest of the amount is granted as loan. So
This is kept as a provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. तो ये उनके लिए एक प्रोविजन यानी कि एक रिजर्व बना के रखा जाता है जो बैंक के पास कभी भी आ सकते हैं, जो ऑलरेडी बैंक के मेंबर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं, वो कभी भी बैंक के पास जा सकते हैं और अपना पैसा वापस ले मांगने जा सकते हैं। तो बैंक उनके लिए एक प्रपोर्शनेट रिजर्व बनाकर रखता है कि वो एक सर्कुलर फ्लो में वो डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स चलता रहे। तो उसके लिए 15 to 20% का रिजर्व सफिशिएंट होता है, क्योंकि सारे लोग एक साथ अपना पैसा वापस मांगने नहीं आएंगे। और उसके साथ साथ बैंक में हमेशा न्यू डिपॉजिट्स का भी इनफ्लो रहता है, यानी कि हर रोज कुछ नए खाते भी बैंक में खुलते हैं। तो बैंक इस तरीके से अपना जो मनी का फ्लो है वो मेंटेन करता है। Then bank make use of deposit to meet the loan requirements of the people. और बैंक जो पैसा हमसे एज डिपॉजिट लेता है तो वो क्या करता है, हम ही को, यानी कि अगर से फॉर एग्जांपल समवन हैज डिपॉजिट एंड अनदर वन रिक्वायर्स द मनी, तो बैंक, मैंने पहले भी कहा था, मीडिएटर का काम करता है। जिनके पास पैसा कम है तो उनको वो लोन देता है, और जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है उनसे वो डिपॉजिट ले लेता है। तो बैंक एक मीडिएटर का काम करता है, और इस बैंक को वर्ल्ड ओवर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज के नाम से भी जाना जाता है, कि वो पैसा पहले लेते हैं और फिर वही पैसा लोगों को एज अ लोन के रूप में वो देते भी हैं। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी में जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो मूव होता है, उसका एक फ्लो बनता है। और जिसके पास बहुत ही ज्यादा मनी या आइडियल है बैंक में रखा हुआ है, तो इकोनॉमी के वो काम आ सकता है। अगर वो एक ही जगह कंसंट्रेट रहेगा, इकोनॉमी के फ्लो में नहीं आएगा, तो पैसा कभी भी इकोनॉमी के काम नहीं आएगा और वो इकोनॉमी की ग्रोथ को हैम्पर करेगा। तो बैंक इस तरीके से सरप्लस फंड को मीडिएट करने का काम भी करता है। बैंक हेल्प्स इन मीडिएटिंग द सरप्लस फंड्स। See, in this way, banks mediate between those who have surplus funds, the depositors. So the people who have surplus funds, they usually deposit money with the banks. And those who are in need of these funds, they are known as the borrowers. And those who are in need, those who require the money, they are known as borrowers. Then bank charge higher interest rate on loans than what they offer on deposits. Now what does this point means? That suppose I went to the bank and I deposited money to the bank, bank will say that bank will pay me the rate of interest 8% per annum. Means suppose I have deposited 1 lakh rupees in the bank, so in a year bank will pay me 8,000 rupees as a interest. Similarly, when I will be going to take loan from the bank, bank will say me you have to pay 14% or 15% as a interest. So when I will be taking money from bank in a form of loan, then bank will charge me more as they offer on the deposits, because that difference is only the profit of the bank. वो जो डिफरेंस होता है जो बैंक डिपॉजिट्स पे देता है और लोन पर लेता है इंटरेस्ट, वो जो डिफरेंस होता है रेट का, वही बैंक का प्रॉफिट होता है, वही बैंक की अर्निंग होती है। और उसी में बैंक अपना सारा एक्सपेंडिचर मेंटेन करता है, यानी कि एम्प्लॉयज को सैलरी देना, बैंक का जितना भी मेंटेनेंस है, सारे चीजें वो बैंक उसी में मेंटेन करता है, प्रॉफिट भी मेंटेन करता है उसी में। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम बैंक का वही होता है। द डिफरेंस between what is charged from the borrower and what is paid to the depositor is the main source of income for the bank. So that is the main source of income of the bank. तो बैंक का main income source क्या है? The difference amount between deposits and granting the loan. तो loan देने में और deposits लेने में जो interest होते हैं अलग अलग, उन दोनों के बीच का जो difference होता है वही बैंक की earnings होती है। Then credit. Credit, simply the loan means the credit. When we say loan, that means we are referring to the credit. So credit or the loan refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payments. So when we say credit, credit means, or the loan is something, it is not necessary that loan should be in the form of cash. Someone can pay services, someone can give someone may give the goods as well as, so those are known as credits. So credits may be of any type, means they can be in the form of goods or services. Only the thing is that in credit or in loan, the payment is promised in future. It is also known as deferred payment. Deferred means which will be paid in
future on some decided day. So if someone is taking money from me, or I am taking money from someone, and I promise that person to pay back money in coming 1 year, so that will be termed as credit or the loan. And see another aspect, another example, if I am a businessman and I have bought goods from my wholesaler in form of credit, means I have not paid him, मैंने अभी उन्हें पैसा नहीं दिया, I said I will pay in 3 months, so that goods will also be considered as goods purchased in credit form, and in future I will pay money. So any promise which will be fulfilled or which will be paid, generally the promise in terms of monetary, means in which money is related, that is known as credit, in which future payments are promised. So that is the credit. So I hope the topics of today are clear to you. Credit and loan activities of bank. Loan activities of bank are very important. You should learn those loan activities by heart, and they are the very much important as a point of your board also, so you should learn it. Thank you.